Hi everyone. My name is Sahana. I did my master's in ancient history and archaeology, and ever since then, I've been working in the field of indigenous art and culture with folk artists, folk performing arts, crafts. I worked here in Dakshinatra for 2 years, and then now I'm working in Delhi. So while I was in Delhi, I curated an event on traditional tattoo artists of India. So I invited as many as I could find because it's very much a dying art. We've lost quite a bit in Tamil Nadu. I learned that by doing some field research with the Todas and all of that. So I did a project called the Godna Project in Delhi, where I invited Mangla Bai from Madhya Pradesh, two more artists from Chhattisgarh, and one from the northeast of India. He's the last person who has any knowledge of why or what the art is at all in northeast. So I'll give you a brief on what I do know about traditional tattoo culture in India, and then we can have a talk with Mangla Bai since she's the artist. Do you want to also sit on stage so then we can also quickly? So Mangla Bai is coming all the way from Madhya Pradesh just for the weekend to spend here at Dakshinachitra, and she speaks Hindi mainly. Yes, thank you. She speaks Hindi mainly. So we're going to have Sneha Ramesh is my cousin. Sneha Mahesh, who is a dancer. She also works with us at SNS. She's brought up in Rajasthan and is fluent in Tamil, English, and Hindi, and is also a key person in terms of organizing this festival. So she will be stepping in to be a part of the conversation and also translate from Hindi to English for those of you who may not know the language. But the reason I want to have the little connection of Sahana, Sahana was a part of the internship program at Dakshinachitra in 14, and it's the same program that I did 5 years prior to that as well. And she's somebody who's actually a very acute sense of in terms of arts management and in terms of grassroots artists and things that are happening across India. So very happy that she's actually in Delhi. She planned her whole itinerary so she could be in Chennai during Utsavam, and thank you so much for being here and spending your time with us. And she was in her festival that she did in Delhi was what inspired this session and bringing Mangla Bai down. So Sahana and Sneha and Mangla Bai have had multiple conversations on what they're going to be talking about and in how they can frame the history of the tattoo traditions and also what are some of the tattoos that you do here. What I'm going to ask is maybe if you can move to one side, so because we do have some pictures that we're going to show of the tattoos and some videos. So I'll start by giving you a brief of what I've understood of the traditional tattoo culture in India, and then we can ask Mangla Bai questions about her ancestry, her history, and her community, and it'll be very related to Madhya Pradesh and where her surroundings. So from tattoo culture in India, as far as I've noticed, it has different names. In the north, it's called Khodna or Godna, which is to poke, right? And in the south, it's Pachakutta or Pachabottu in Telugu and maybe in Kannada also. So there seems to be different reasons for why communities have gotten down, and it's been traced back as far as 2,000 to 3,000 years old. They found it on Egyptian mummies because it goes down till your bone. So because of the fact that it remains with you for so long, one of the main purposes for why tattoos were put traditionally, it was something for them to identify with after death. That's the main reason. If you ask people, why did you get this? Or if you ask anybody who you see who has the traditional tattoo, if you ask them, why have you gotten this done? They say we don't have the first reason I've gotten, and this is from people who are north, south, I've gotten this answer, which is very common. They've said, we don't take our clothes with us when we die. We don't take anything with us when we die. We take this. This goes with us. Even after death, it will stay with us. So it's some form of a very significant identity for them. That is one. And the other thing is to identify one tribe from the other. Like how certain communities wear certain saris, to identify themselves from this particular community, this particular pattern, this particular motif. Same thing. The same format applies here as well. So some tattoos that we see are very particular to certain tribes. So certain very like markers or motifs that are there on the forehead, depending on where they are. You know that they are from this tribe. It gives them identity, a very strong identity. That is one. The other thing very interesting that is still happening today, actually all the motifs and kolam, rangoli, muggu patterns that people get on their hands, that has stopped in the south. But
another purpose for why tattoos are done is for curing diseases, and that still goes on till today. She still does that as well. Manglabai also does ilaj ke liye jo karte hain, that still happens. Mostly it's to cure joint pain, arthritis and things like that. Many times it's not very aesthetic as such, it's just splotches, big splotches on your back or depending on where it is. In Andhra I've noticed there are small crosses, so for knee pain they'll have 2 crosses here. And then one old lady had just 1 dot very close to her forehead just here, and I asked her why. She said one-sided headache. And I asked her, did it work? And she said, yeah. So it's like that. Then I asked them, okay, then do you have any study? Did you study any anatomy or is it? Then they said, yes, we study the Nadi Shakti and something like that. So I'm guessing that's related to the nerves. So they do have some study which I think their parents or whoever or the medicinal practitioner will do it. So usually Mangla ji is from a particular community where her mother, grandmother, they are all tattoo artists. Her aunt, they are all tattoo artists. And their role, what they believe is, their role is to give identity to others. So she knows the motifs and symbols used for everyone and for at least most of the neighboring villages around her or communities around her. Apart from that, yes, and there's some people in Karnataka I know who are doing it on specific days, even for the curing and the healing tattoos I'm talking about. She also says she'll only do it for like very particular days, which will be I think tomorrow and Thursday perhaps. So she said if somebody wants to get something done, they'll have to tell me in advance because I'll need to get those kind of things. And the other thing is the process for making the ink. Ink is made just how traditional kajal is made, no? By covering it on top and heating it and collecting that ash that's there and then mixing it with oil. Now, because people don't have the trees anymore or the barks anymore that they used to use, they're using kerosene. So that could have problems, but people are still getting tattooed in that manner today. She uses traditional ink as well. They call it kajal. They keep it very small. Then they have, traditionally, tattoos would have been done using thorns. But now there's needles, and even the needles that's used for machine, for stitching, they use those needles. And they tie a thread around it continuously, so they have a grip, something to hold the needle with. It's pretty thin, right? So for thicker lines, they tie together 3 to 4 needles all together. They tie it and they tie it, so they have some grip, and it'll almost be like blunt force trauma. You'll get much thicker lines. That is there. So in the south, there seem to be a lot of kolam, rangoli. I'm talking about motifs now. In the south, there seem to be a lot of kolam, rangoli, those kind of patterns, and a lot of healing tattoos as well. Northeast also has very strong tattoos, but all connected to their war practices or ritualistic practices. So tattoos are usually associated with their livelihood or their war. But the thing is now Northeast has absolutely no trace of tattoos at all. There might be 2 or 3 elderly people who have tattoos, because once headhunting and other things got banned, associated practices with it got banned. In fact, there is a queen in Nagaland who's written songs of lament, because it was her duty, it was her role to tattoo these men who would go into war. And now she wrote a song about how she has no role anymore, because she's not tattooing anymore. There's no one who's going to get tattoos. In, I think, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, the art of tattooing is still going pretty strong. So this art is really dying out right now. In the Himachal area, I have not really found much, but these are the areas that I have looked into so far. Odisha and Chhattisgarh, Madhya Pradesh, UP, yeah, Jharkhand, it's going relatively strong, but again, nobody knows these artists. Nobody knows the artists, nobody has documented their knowledge, nothing at all. Now I think people have started getting interested. People are not getting machine tattoos now, they're getting hand poke now. Then from hand poke now, people are getting interested in tribal tattoos. So maybe it will, hopefully it will start to pick up and these people will get the recognition that they deserve. So I think we can start asking Mangla some questions now. Yeah? Okay. Mangla ji, आप आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए, और आपका बादी बदनिन का जो जाति है ना, उस जाति के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा. मेरे नाम मंगलाबाई मरावी है और मैं ग्राम पोस्ट लालपुर, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से आई हूँ. और जो हमारे जाति प्रथा है, वो हमारे जाति के जितने भी काम करने वाले हैं, ये हमारे धंधा का नाम है बादी और बदनिन. बाकी हम लोग गोंड में ही आते हैं. मतलब उपजाति है मेरी मरावी है,
और मेरे माँ के नाम श्रीमती शांतिबाई मरावी, मेरे पापा के नाम श्री चमर सिंह मरावी हैं। So she just gave a basic introduction of herself. She's saying her name is Mangla Bai Maravi and she comes from a rural area of Madhya Pradesh, which is close to Jabalpur. आप कहाँ से हैं? आपने क्या जगह का नाम बताया था, आप फिर से बताएंगी? लालपुर अमरकंटक के पास ही है। So it is close to Amarkantak. It's a place called Lalpur and she belongs to the Gond community. No, she belongs to the Badi Bandhan. Badi Bandhan community and आपका Upajati जाति is वही है? हमारी जाति, हमारे ये जो काम करते हैं इसलिए से बादी और बदनीन कहा जाता है, लेकिन हम लोग गोंड में ही आते हैं। that's what she जैसे गोंड की भी कई जाति होती हैं, इसी प्रकार से हम भी गोंड में आते हैं, क्योंकि हमारे जाति गवर्नमेंट को पता नहीं है, शासन कह रहा है कि वो ऐसा जाति है ही नहीं, बादी जाति के लोग है ही नहीं। So she's इसलिए saying से she's सभी she लोग comes- गोंड बन चुके हैं अब। They're all, she says, they come under the Gond community because the government is not aware of the exact communities that they belong to. So they're all being referred to as people belonging to the Gond community, which is very interesting, I think. और बताइए अपने बारे में, इस प्रथा के बारे में। शांति जी के बारे में बता दीजिए जी। आप। मेरी माँ को अवार्ड भी मिल चुकी है, जैसे देवी अहिल्या सम्मान मिल चुकी है शांतिबाई को। और मेरी माँ से और मेरे पापा से मैंने सीखी है, लेकिन जो गुदना प्रथा है वो प्राचीन कालों से चली आ रही है, जिस समय में ना ही कपड़ा होती थी, ना ही कोई खाने का व्यवस्था, ना ही कुछ भी नहीं। जैसे कि नांगा बैगा और नांगा बैगिन जो जंगल में ही ज़्यादातर रहते थे, तब से गुदना चली आ रही है। मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी ताकि आप बताते जाएं। So she's saying that the art of tattooing has been existing since the ages of Adam and Eve. I think she referred to specific words of in her language. So people who lived in the jungles. So the practice has been existing since that time, and she is gonna tell us in bits and pieces so that we are able to follow what she's saying. जिस समय में आदि मानव थे उस समय में कुछ भी नहीं था, तब से गुदना चली आ रही है। कुछ समय के लिए शायद इंद्र नाराज हो गए होंगे, तो मतलब धरती में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं होने के कारण सारे जीव जंतु जितने भी हैं वो भूख से मतलब प्यास से तड़प रहे थे कि हम कैसे करके जिएं। तो नांगा बैगा और नांगा बैगिन महादेव और पार्वती के पास गए और बोले कि हमें धरती में पानी चाहिए ताकि हम अपने लिए खाने के लिए कुछ भी यूज कर सकें या कि कोई फसल उगा सकें, ऐसे करके। So she's referring to a short anecdote or a story or a mythological incident that could have happened. So she's saying that Lord Indra probably got angry with the earth, and there was a curse which was made to happen, because of which there was no water on earth, and the early humans went and requested to Lord Shiva and Parvati that they needed water to be able to survive on this land. तो महादेव और पार्वती बोले कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, इंद्र है मतलब देवताओं का राजा, और उन्हीं के हाथ में है पानी कहाँ बरसाएगा कहाँ नहीं बरसाएगा। तो आप इंद्र के पास जाओ और उनसे पानी की मांग करो। तो नांगा बैगिन बोली कि मैं तो पूरा नंगन हूँ, मेरे शरीर में ना कोई वस्त्र है ना कोई धागा है, मैं ऐसे अगर जाऊँगी तो वहाँ तो एक से एक अप्सराएं होंगी, मेरे को द्वारपाल ही द्वार से वापस कर देगी, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे। ऐसे करके वो बोलने लगी नांगा बैगिन कि अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो इंद्र के दरबार में जाने ही नहीं देंगे, द्वारपाल ही लौटा देंगे, ऐसे करके। तो वो बोले कि मेरे को ऐसे श्रृंगार कर दो कि इंद्र भी प्रसन्न हो जाए और पानी बरसाने के लिए राजी हो। So Lord Shiva suggests that they go and meet Lord Indra because he is the Lord of rains. So why don't you go to them and request them, why don't you go to him and request him to make water reach earth again.
So the early human female says that I don't have any clothes on my body, there's not even a thread. How am I supposed to meet the Lord of the Lords? So suggest something, or suggest an ornamentation that I can adorn myself with, so that I can go and meet Indra, because his court has so many beautiful women, the Apsaras. So the Dwarapalakas, the people who protect the entry gate to Lord Indra's court, if they see me without any clothes or ornamentation, they might just send me back from there. So please give me some ornaments on my body so that I can go and visit Lord Indra. तभी से बादी और बदनीन को महादेव और पार्वती ने बनाया और उनके काम दिया उनको कि ये बैगा महिला जो हैं उनके पूरे शरीर में इतना श्रृंगार करो जो हमेशा के लिए रहे उनके शरीर में, तो इतना गुदना करो कि पूरे श्रृंगार हो जाए उनके और हमेशा के लिए उनके शरीर में रहे, और ये इंद्र के पास जाएं और मांग करें पानी की, ऐसे करके तब से मतलब गुदना चली आ रही है। और बादी और बदनीन को बनाया उसी समय, इसीलिए उसके जाति के नाम भी बादी और बदनीन पड़ी। लेकिन अभी सब लोग बादी को छोड़ के कोई गोंड हैं, कोई प्रधान हो रहे हैं, तो कोई माड़िया बन रहे हैं, क्योंकि शासन कह रहा है कि बादी जाति है ही नहीं, इसलिए से सब बदल चुके हैं। हमारे इसमें केवल हम ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, नहीं तो अब ये लुप्त हो रही है, नहीं करवा रहे हैं, इसलिए से सब बदल चुके हैं। तो उनको फिर पूरे शरीर में श्रृंगार करके और फिर इंद्र के पास भेजे। तो जैसे वो इंद्र के पास गई तो इंद्र देखा उसको, बहुत प्रसन्न हुए और बारिश बरसाए। फिर धरती में आज भी नांगा बैगा और नांगा बैगिन इंद्र की पूजा करते हैं, उसको बिद्री पूजा कहते हैं। बिद्री पूजा आज भी करते हैं फसल के पहले, और उन्हीं के जरिए मतलब बारिश हुई है, ऐसे मानना है सबका। So they were bestowed upon with powers, and I think Lord Shiva blessed them with the art of the skill to make tattoos. So that's how the early man and women of that community were formed, and they were allowed to go and meet Lord Indra. And she's saying that that's how Badi, and what was the term? Yeah, the Jati, Badi and Badnan. So that is how they were created. But now they don't exist. Everybody is either a Pradhan or a Gond, or nobody knows how that history was there. So even today, the people who belong to that community and the tribal people, they go and pray to Lord Indra for the well-being of the planet and for water, and they believe that that's how they're able to harvest a lot of crops with a lot of and there's a lot of prosperity in their land. Did I miss out on anything? Yeah. And also another important thing I forgot to mention as to why they put on the tattoos is permanent jewelry. I completely forgot, only when she said it I remembered. Tattoos are also a format of permanent jewelry, that this is something that's never going to come off of me. उसी दिन से गुदना प्रथा चालू हुई है। तब से सभी महिलाएं, बैगा जाति की जितनी भी महिलाएं हैं, वो अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा करके पूरा श्रृंगार समझते हैं उनको, और पूरे शरीर में कराते थे। लेकिन अभी सब बदल चुके हैं, अब ये लुप्त हो रही है किसी न किसी वजह से। जैसे कि कोई पढ़ रहे हैं तो नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो गुदना नहीं करवाएंगे, सब लोग मजाक उड़ाते हैं, ये सब क्यों काला काला करवा रहे हो करके, तो इसलिए नहीं कराएंगे, ऐसे कर करके अब सब बदलते जा रहे हैं, तो नहीं करा रहे हैं। और कोई कोई अभी भी ऐसे बाकी हैं जिनको कराना है, वो कराना चाहते हैं। हमारी ये पूर्वजों का है, हमारे पारंपरिक है, हमारे जाति का पहचान है, हम इसे करना चाहेंगे, ऐसे वो कह भी रहे हैं। लेकिन पैसे नहीं होने के कारण में वो भी नहीं करा पा रहे हैं। तो बहुत सारे गेस्ट मेरे यहाँ आते हैं, विदेशी लोग, तो मैं जो लोग कराना चाहते हैं तो ऐसे करती हूँ कि विदेशी लोगों से उनका जो कीमत होती है मैं ले लेती हूँ और उनको फ्री में गुदना कर रही हूँ। तो ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो देखने को मिल सकती हैं, जो अभी कराए हुए हैं और पूरे शरीर में कराए हुए हैं। So she's saying that the art of tattooing has significantly decreased over the years, and today there are very few people who are still a part of the community who are sticking to the art of getting
tattooed or tattooing on the other people. So what was considered ornamentation and decoration back then has been made a topic of ridicule, and there people who, as and when they're getting educated in their communities, they are refraining from the act of getting the tattoos or practicing the art of tattooing on other people as well. She also said that there are a few foreigners who are interested in getting tattoos because that notion is a little more common over there. But she and her family does it for free just to make them aware that the art form exists and to propagate the art of tattooing that they have been practicing. Yeah, this is something you do hear commonly in the north. A lot of young people, when they get their tattoos, they've stopped getting them because everyone's going to the same school now or the same college, and you mix with a lot more people. So when somebody has a tattoo right on their forehead, oh, this is not there. When somebody has a tattoo right on their forehead, they look pretty different from everybody else. So they're being a little ridiculed. They're feeling very different from the others. So now that's also become a point where they've stopped getting tattoos. What used to be a form of identification is now getting lost. आप जिस कम्युनिटी को गोदना करते हैं ना, आप जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में आप करते हो, आप बाइगा लोग को करते हो, गोंड को करते हो, ऐसे कितने सारे लोग को करते हो आप? जितने भी आदिवासी लोग हैं, गोंड हैं, प्रधान हैं, बैगा हैं, अहीर हैं, ढीमर हैं, फिर साहू भी कराते हैं कई लोग। तो जितने भी जाति के हैं वो सभी जाति के गोदना करती हूँ मैं। ओके, तो आपको ये गोदना जो बाइगा लोग करते हैं या गौंड लोग करते हैं, आप इन सब का गोदना पता है? अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हमारा काम ही है, महादेव और पार्वती जिस दिन से बादी और बदनीन को बनाए हैं गोदना करने के लिए, तो उनकी काम दिया है। जैसे जो किसान है, नागा बैगा और नागा बैगिन है, उनका काम है हल चलाना, और जो लोहार जन्म दिया है तो उनका काम है लोहा कूटना। इसी तरह से हमें जब बनाया है तो हमको बोला है कि आप सभी जातियों के गोदना करो। ऐसे हमारी ये प्रथा है, ये पारंपरिक है अपनी। और हमारे आजा दादी, हमारे पूर्वज, हमारे कई पीढ़ियों से जितनी भी हमारी पीढ़ी चली आ रही है, वो सभी लोग यही काम करते थे, गोदना। एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, बैगांव के इधर, गोंड के इधर, जितने भी जाति के लोग हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जा कर के और सभी के गोदना करना, और उनके लिए उसके बदले में चाहे वो अनाज दें, पैसे दें, जो भी दें, उसी से अपना जीवन यापन करना। She's saying that her role, that the role of her community and her ancestors so far, just like how the Baigas will yield crops, and just like iron workers work with iron, just like that, their role and her community's role on earth is to give identity to others through Godna. That's what she's saying her ancestors' job is. So whatever they earn from there is what they earn, but her job is to know the tattoos of each and every community around her. So if I may just add, she said they not only get monetary returns, whatever they offer, they take it, whether it is grains or food or anything. So it's not just money that they look for, but they truly believe in what they're doing. The purpose of their creation is to give identity through this ornamentation to different jatis, and they are very well aware of the kind of identification marks that each of these communities have been following. आप अब बहुत सारे जगह आप अभी जाते हैं और ये गोदना काम करने के लिए, तो आप अभी मुंबई, बैंगलोर, अभी शहर में भी आने शुरू किया है ना? जी, तो उसके जी, बारे जी। में आप थोड़ा बता दीजिए कि फ़र्क क्या है? गांव में अब गोदना कम हो गया है और शहर में ज़्यादा हो गया है। तो कभी न कभी मतलब मैं गांव में भी रहती हूँ और इधर उधर आना जाना भी करती हूँ, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, कोलकाता है, भोपाल है। मतलब हर जगह में मैं 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन, 10 दिन के लिए हमेशा जाती रहती हूँ। तो इसमें सरकारी बुलाव आती है मेरी कि आप वहाँ पर इतने दिन के लिए आ रहे हैं, ऐसे करके तो जाना होता ही है। जैसे खजुराहो है, खजुराहो म्यूजियम में भी बुलावा है, मेरी बहन वहाँ जाके काम की है, मैं तो नहीं जा पाई
क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती इस समय, इसलिए से एक न एक घर में रहते हैं। अभी वो घर पर है तो मैं अभी यहाँ आई हूँ चेन्नई में और कोई ना कोई घर में और कोई ना कोई ऐसे बाहर जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे काम मतलब शहरों में ही चले, गांव में भी चलती है, क्योंकि गुदने से हम लोग इलाज भी करते हैं, तो गुदने से कई प्रकार की बीमारी भी ठीक होती है। So she was asked that of late she has been called to a lot of different cities and not just the rural areas. So she asked her to tell a little more about it. Mangla ji just said that she's been called to different cities like Mumbai, somewhere in Gujarat. They have been also taken on board by the government. People from the government are inviting them to talk about their art form in different places. And if she is not, so she has her mother who is not able to travel a lot now. So one of them make the commute and go to these different places and take up projects or explain their art form in different cities. And this is how right now her mother is back at home and she is here in Chennai for this festival. आप सरकार का काम भी करते हैं ना म्यूज़ियम में भोपाल में? जी हाँ, म्यूज़ियम में जैसे अभी यहाँ भी म्यूज़ियम बन रही है, अभी उद्घाटन हुई है 22 तारीख को खजुराहो में, वहाँ भी मेरी बहन बनाई है गुदना। मैं बस नहीं जा पाई हूँ, लेकिन हम लोग जितने भी हैं, हम सभी बहनें, माँ बाप, सब लोग हम लोग यही काम करते थे गुदना का। तो जैसे जनजाति संग्रहालय है, मानव संग्रहालय है, भारत भवन है, और जैसे केंद्र है कला केंद्र, जैसे पूर्व सांस्कृतिक केंद्र है कोलकाता, वहाँ भी हमने काम किया है। और फिर यहाँ नागपुर केंद्र में भी काम की है, इलाहाबाद केंद्र में भी काम की है, मतलब सारे जगहों में जा चुकी हूँ। और केंद्र वाले भी कभी कभी यहाँ से वहाँ जहाँ भी कैंप है या सेमिनार है या कुछ भी है तो वहाँ आप जाओ ऐसे करके भेज देते हैं। तो ऐसे चल रहा है अभी। और कैनवास में भी काम करना है, दीवालों में भी बनाना है, क्योंकि ये लुप्त हो रही है, हम इसे बचाना चाहते हैं। मैं तो काफ़ी छोटी थी तब से गुदना कर रही हूँ, मैं जब 7 साल की थी तब से गुदना कर रही हूँ। एक्चुअली मैं महिलाओं को जो पीठ पे काम करवाना होती थी तो मेरे लिए कोई ऊंचा स्थान होना चाहिए, तभी उनको मैं उनके पीठ को पहुंच पाती थी। तो इतने समय से मैं गुदना कर रही हूँ, काफ़ी सालों से कर रही हूँ मैं, 20-25 साल हो गया मेरे को गुदना करते हुए। और अब काफ़ी फाइन काम करती हूँ, जैसे आपको मशीन में चाहिए वैसे मैं हाथों से और सुई से बना लेती हूँ। So she had asked about the kind of government projects that they are taken on board for. So she said that recently there was an inauguration of a museum in Khajuraho, for which her sister is taking charge of the art of tattooing over that place. Apart from that, she has been a part of a lot of other workshops and seminars in Kolkata, Nagpur and other cities. I think she herself has been to Khajuraho as well. And she also mentioned an interesting fact that she has been tattooing others from the age of 6 or 7. So she just said, very sweetly mentioned that she had to be sitting on a higher platform, or the other people had to raise their leg or something at a higher platform for her to be able to reach and tattoo them. So, and she's been doing it for 22-23 years from then to now, and she continues to practice it even now. माइक में बोल दीजिए। हाँ जी, आपको कोई भी अगर देखेंगे तो आपको कैसे पहचानेंगे? और ये अगर माथे में वो गुदना करा के हैं तो सभी लोग उनको देख के ही पहचान जाएंगे कि ये बैगा समाज की महिला हैं। जी। Each tattoo has a separate meaning. I'll show you all the flashcard and ask her to tell you the meaning as well. This only the Baiga people get. The one on the forehead is the first one I think children get. They get it when 10 साल के है ना, जब ये ऊपर का शरीर में 10 साल की आयु में ये बन जाता है, 12 साल में पीठ बन जाती है, फिर एक एक साल बाद फिर यानी कि 18 साल में पूरा गुदना हो जाती है, केवल छाती को छोड़ के। छाती जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद ही छाती का गुदना कराते हैं। So when you're 10, they get the forehead tattoo. Then when you're 12, they get it on the back, right? On the back.
on the back, and then the legs. Rest of the body as the progress aging. They get the tattoos on the breasts only after they bear a child, give birth to a child. Only when they give birth to a child. Until then, everything is done except for the chest piece. बाइगा लोगों को कैसे समझते हैं कि सब लोग अभी बाइगा का टैटू बना रहे हैं? उनकी खुशी है कि उनका टैटू हमारे ऊपर, लड़कों के ऊपर, उनका कम्युनिटी में लड़कों के ऊपर नहीं चलता है ना? नहीं, वो लोग कभी कराते नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर हम शिकार करने जाएंगे तो हम गुदना देखेंगे तो हमको उनका शिकार नहीं मिलेगा। कोई भी जानवर जैसे वो मार के खाते हैं वो शिकार नहीं मिल पाएगा। ऐसे इसलिए से बैगा समाज में कभी गुदना करते ना देखते हैं और ना ही वो गुदना करवाते हैं। So the men of the Bega community do not get tattoos as they believe that if they get tattoos, so they are primarily considered as hunters of the community. So if they go hunting with the tattoos, then it might affect the hunting process or they might get caught. So only the women in the community get tattooed. And they're not allowed to see it also. Yeah. They're not allowed to watch the women get tattoos as well. मैं ये पूछ रही हूँ कि बाइका लोग को वो खुशी है कि अभी शहर में बहुत सारे लोग उनका गोदना हमारे ऊपर बना रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, लगता बहुत है? खुश हैं वो लोग। क्योंकि मैं अभी जब पिछले महीने में मुंबई उनको ना कार्यक्रम के लिए लेके गई थी। उनका कर्मशैला दशहरा नाचा होता है बैगाओं का, तो ऐसे में 15-16 लोगों को वहाँ मुंबई में लेके गई और वो जब देखे हैं वहाँ जा कर के तो बहुत खुशी हुई उनको। और वो अभी भी चाहते हैं कि हम अपना प्रथा को बचाना चाहेंगे और फिर हम ये गुदना आज भी करवाएंगे करके। और फिर उनका गुदना किया हुआ भी है और बाकी के लोगों को भी वो करवाना चाहते हैं। I asked her if the Baiga people and the community is okay with other people getting their tattoos, because if men don't get their tattoo and a lot of people in the city are getting their tattoos, how do they feel about random people not part of their community getting their tattoo? She said they're very happy. She said they're very happy that the art is still preserved somewhere or the other. So yeah, we can actually show the meme. Yeah. So I'll show her some of the flashcards and ask her from which community these motifs are from and what they mean. आपको ये कार्ड्स दिखाएंगे और आप अगर इनके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे तो हम काफ़ी खुश आप ये बिच्छू के बारे में बताइए, कौन कौन लगवाते हैं और क्यों? गोंड समाज में लगवाते हैं बिच्छू। और बिच्छू के मतलब है कि मतलब बहुत शुभ मानते हैं, हमें बिच्छू भी ना काटे। क्योंकि वो लोग पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, आदिवासी लोग हमेशा खेती से रिलेटेड कुछ भी करते रहते हैं, तो वो बिच्छू बनवा लेते हैं अपने हाथ में, बहुत शुभ मानते हैं उसको। और वो आप जिसको रखे हो उसमें मचिया है, बिरछा है और मचिया बिरछा और बिच्छू, ओम, श्री सीताराम, ये सब बनी हुई हैं। उनके अलग अलग मतलब है। मचिया के मतलब है कि जैसे ऊंचा सिंहासन, महाराजाओं का चेयर। और बिच्छू तो बताई दी। जेहरा बिरछा यानी कि बिरछा मतलब फल भी देती है और छाँव भी देती है, तो शीतलता और अन्नपूर्णा के लिए करवाते हैं। So she had asked her Mangla ji to explain about the different symbols that are there, and she specifically asked her to talk about the bichu symbol. Bichu is Hindi for scorpion. So she said that scorpion is also it's symbolic of auspiciousness. So whoever gets this tattoo is very prosperous in life is the belief. Apart from that, they also have एक बार आप फिर से बता देंगी नाम सारे ये महाराजा की मचिया है, वो महाराजाओं की कुर्सी, जैसे कि सब पर राज कर सके उसको बैठ के। So this is machiyar, which is like a throne of a king. So when you get that, it is believed that people are able to command over the place and live like a king is what it symbolizes. आगे ये बिरछा है, बिरछा। शीतलता और अन्नपूर्णा के लिए कराते हैं। This is for Sheetalta and Annapurnata. It's basically prosperity. Annapurnata is Annapurna is the lord of food. So whoever gets this is prosperous in life. It's for calmness and prosperity. These are the roots. Yeah. And since the tree gives you both shade and fruits,
Yeah. So it's for Anu. कोई भी वृक्ष आप लगाते हो तो वो फल भी देती है और छाए भी। यदि आप धूप से थक के आ रहे हैं और रास्ते में कहीं पे अगर एक पेड़ लगा हुआ है तो आप उसमें थोड़ी देर आराम करोगे तो थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिलेगी। She's saying any tree has a root and it also gives you shade. So it's almost significant if you are traveling from somewhere you need to rest. So a tree is the best option to give you shade for. So I think what she says by this is fruitfulness, at the same time some sense of shade or comfort or protection when you get this tattoo. I think we have about 5 more minutes and we can leave it open to anyone who might want to ask a question. हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को आपसे सवाल पूछना हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तो पूछेंगे तो हम बता ही देंगे कि सबका मीनिंग क्या है। जी बिल्कुल। She's also saying that she's going to be here for today and for tomorrow. So if you are interested in meeting her at the activity corner, you can talk to her there as well. She'll be happy to explain the tattoos and their significance there. Yeah. Anything anybody wants to ask? आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में सबसे कठिन मुश्किल टैटू गोदना क्या किया है, आप बताएंगे? मेरे लिए तो सभी इजी थी क्योंकि मैं बचपन से जब मैं जानती भी नहीं थी कि ये क्या चीज़ है तब से कर रही हूँ तो मुझे मुश्किल कोई नहीं हुआ। मैं आज तक जितने भी टैटू की हूँ तो सब मेरे लिए इजी थे, अच्छे से कर लेती थी मैं। She is saying that she has never found anything difficult in her life because she has been doing it from a very young age. So far she has not found anything that's really difficult. Everything has been easy for her. She's been doing it from an age when she didn't even know what it is, so it's all easy for her at this point at least. मेरे मम्मी पापा यही करते थे तो मैं भी उनके साथ में जो भी गांव जाते थे वो लोग, मैं अपनी मम्मी पापा को नहीं छोड़ती थी। मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ इसलिए से मेरे को साथ में ही लेके जाते थे। मम्मी जैसे काम करते थे मेरे को भी करना है, मम्मी मेरे को भी करना है, मैं भी गुदना करूँगी, मैं भी गुदना करूँगी, जिद करती थी। तो फिर 1 या 2 लाइन बना के और मेरी मम्मी मेरे को सुई थमा देती थी बचपन से ही। तो बचपन से 1 लाइन 2 लाइन करते 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 मैं 7 साल की ही उम्र में पूरे टैटू बनाना सीख गई थी। She had the opportunity to travel with her parents wherever they went to do tattoos. So she used to ask her parents to let her do 1 or 2 lines and slowly it became a practice, and from the age of 7 she's been practicing this art as a full form. आपके बाद आपके परिवार में गोदना कौन करता है या कौन करेगा, आप बता पाएंगे? शायद एक बहन की लड़की है, वो अगर करना चाहेगी तो वही कर सकती हैं, नहीं तो अब शायद मेरे बाद कोई कर पाए और मेरे बहनों के बाद ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो करना नहीं चाहते और हम किसी पे दबाव नहीं डालना चाहते। अगर उनकी रुचि है तो वो करें और अगर उनकी रुचि नहीं है तो ना करें। She's saying that there is one child of one of her sisters who might be interested in practicing and carrying this art form forward, but they don't want to put pressure on any of the next generation to practice it. If it's up to them whether they want to take it forward and practice it. So the art form is really dying and there are very few people who are going to take it forward. वैसे हमारे घर के छोड़ के और बाकी के लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, मैं उनको सिखा रही हूँ, वो करना चाहते हैं। अभी छोटी सी पोती हुई है, 5 माह की है, अगर आगे चल के वो करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और बहन की जो लड़की है अभी 5 साल की, वो अभी से करना चाहती हैं तो हो सकता है कि वो करें। She's saying that other than her family, there are a few people whom they know that who want to learn this art form. So there is a grandchild born to one of her acquaintances like that, who may or may not take this art form forward. But yeah, I think she's saying that they're very hopeful about the grandchild and her sister's daughter, who is likely to take up this art form and practice it. Thank you, Manglabai. Let's give her all a little round of applause.
Thank you, Sahana, for being awesome and thinking of fun things like this. Thank you, Sneha, for patiently translating and contributing to the conversation. So thank you to all of you. We have something for Manglabai, which I will request Sahana only to give. Thank you, thank you, thank you.